Assalamualaikum students, welcome back to our online studies and our channel Iqra Islami High School English Medium. Today we are going to start a new chapter of maths, chapter number 13, surface area and volume part 1. We are going to discuss some points. You have to write down these points in your maths notebook with the title of the new chapter number 13, surface area and volume. So first we will discuss about the surface area of cuboid and cube in this chapter. Then one by one we will discuss about some different shape of object in which we will discuss their area and their volume also. So let's start our chapter. When we cut out many rectangles of the same shape and size from the cardboard and stack them up in a vertical pile, we get a cuboid. So if we take many rectangle piece of same size, same shape and size from the cardboard and stack them up in a vertical pile and हम उसको stack them up यानी एक बॉक्स के जैसे हम उसे जोड़ दें तो we get a cuboid. So like this the object or the box which we got is the shape of a cuboid. Cuboid is a solid having 6 rectangular surface. Sometimes one pair of opposite surface of cuboid may be square. So here it is said that cuboid is a solid shape having 6 rectangular surface. Cuboid shape is like one of the mobile box which is at your home, the duster of our classroom. Even the shape of our mobile phone is also cuboid shape. So hope you understood the shape of cuboid by such examples. Now sometimes the pair of opposite surface of cuboid may be square. So it is also happen that out of the 6 surfaces we can say that there are 3 opposite pair of the surfaces. So sometimes the opposite surface, the pair of opposite surface may be square also. Now the formula for the total surface area of a cuboid, 2 into LB plus BH plus HS, which you have to remember, and this formula will become useful while we do the examples and the sums of our exercise, where L, B and H are the 3 edges of the cuboid. In other words, L, B and H are the length, breadth and the height of the cuboid respectively. Now the next is a cuboid in which length, breadth and height all are equal, then it is called a cube. As we all know, the dice for playing Ludo or snake and ladder. So this type of a shape or the cube, puzzle cube that we used to play, this type of shape is called cube shape, in which all the 6 sides are the square. Now the total surface area of cube is equal to 6a square. If we talk about all the side of the closed cube, then its total surface area is 6a square, in which a is the edge or the length of the cube. In a cuboid and cube, the surface other than bottom and the top are called lateral surface area. Now suppose you have to assume that one of the cube or cuboid is there in which there is no bottom and there is no top. Suppose if we take the example of our room, and the shape of the room is maybe cuboid or cube. Now just you have to assume that the room is the without roof. एक ऐसा रूम है कि जिसकी ना छत है ना बॉटम है, उसका फ्लोर भी नहीं है. अब आप एज्यूम कर सकते हो ऐसे रूम को कि ओनली उसकी जो 4 दीवार है वही है, ना उसका फ्लोर है ना उसकी छत है. सो दिस टाइप ऑफ cube or cuboid is now called the, and if we find to area of this type of cube or cuboid, so this is called the lateral surface area, and these surfaces are called lateral surfaces. So lateral surface area of a cuboid is 2 into H into L plus B. Now as we know, 2 into L plus B, 2 into L plus B is the perimeter of rectangle and H is multiplied with it. Therefore lateral surface area of cuboid is equal to height into perimeter of base. Now the lateral surface area of cube is equal to 4a square. Now here the relation between meter square and centimeter is given, that you have to remember. It will become useful while we will do the examples. 1 meter square is equal to 1000 centimeter square, 10,000, and 1 hectare is equal to 10,000 meter square. Now we will do example number 1 and 2 of our textbook. Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on the wooden box covered with the colored paper with the picture of Santa Claus on it. मैरी को एक क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है और उससे एक ऐसे वुडन बॉक्स के ऊपर रखना है कि जो कलर पेपर से कवर किया गया है और जिसके ऊपर सेंटा का फ़ोटो है. She must know
द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज़। अब ये बॉक्स को कवर करने के लिए जितना पेपर चाहिए उसे उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में जानना है। इफ़ द बॉक्स हैज़ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। यानी अगर वो बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 80, 40 एंड 20 सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर पेपर की शीट हो ऐसे उसको कितने पेपर चाहिए होंगे कवर करने के लिए। नाउ सिंस मैरी वॉन्ट्स टू पेस्ट द पेपर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉक्स, द क्वांटिटी ऑफ पेपर रिक्वायर वुड बी इक्वल टू द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉक्स। यानी उसको जितना पेपर चाहिए होगा वो बॉक्स के सर्फेस एरिया के जितना होगा, विच इज़ ऑफ द शेप ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड शेप का है। नाउ द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 80, 40 and 20 centimeter. Therefore, we have to find the total surface area of this box. Now we have the formula for the total surface area of cuboid box is equal to 2 into LB into BH plus HL. So 2 into 80 into 40 plus 40 into 20 plus 20 into 80. So 3200 plus 800 and 1600. तीनों तीन के मल्टीप्लिकेशन के बाद का आंसर है। नाउ तीनों तीन का अगर हम प्लस करेंगे सो 5600, सो 5600 ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बॉक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट शीट of paper by which we have to cover the cuboid box. Now its area is 40 into 40, so 1600 centimeter square. Therefore the number of sheet required is equal to total surface area of box upon the area of the square sheet of paper. So 11200 upon 1600 is equal to 7. So she would require 7 sheet of such square paper to cover the box. Hamid has built a cubicle water tank with the lid for his house. अमित ने एक बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक, क्यूबिकल शेप की एक वाटर टैंक बनाई है जिसके ऊपर से मतलब ढक्कन है उसके घर के लिए, विच ईच outer edge is 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with the square tile of the size 20 centimeter. Now he gets the outer surface of the tank. टैंक की जो बाहर की सरफेस है वो उसे टाइल्स से कवर करनी है, ऐसी टाइल्स के जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल शेप की ही टाइल्स है। See the given figure. So find how much he would spend for the tile if it costs for rupees 360 per dozen. पर डज़न यानी 12 टाइल्स की जो प्राइस है वो 360 है। तो इस तरीके से उसे कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी और उसके लिए टोटल कितना कॉस्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस हमिद इज़ गेटिंग द 5 आउटर सरफेस ऑफ द टैंक, बिकॉज अगर घर के ऊपर टैंक बनानी है तो जो घर की छत है वो टैंक के लिए उसका बॉटम हो जाएगा। तो हमीद को ये क्यूबिकल टैंक के लिए बॉटम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली उसकी जो 4 साइड है वो आएगी और लीड यानी ऊपर से जो टैंक बंद है वो ही पोर्शन आएगा। ओके, तो टोटल 5 साइड मतलब उसे आउटर सरफेस में बनानी है। नाउ ही वुड नीड टू नो द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द बेस, यानी बेस के एरिया के अलावा बाकी बची हुई जो 5 साइड है उसको मिला के उसे टैंक का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ द एजिस ऑफ द टैंक इज़ 1.5 मीटर। कन्वर्ट अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 150 सेंटीमीटर, बिकॉज उसने जो टाइल्स लगानी है उसका मेज़र हमें सेंटीमीटर में दिया है। सो द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक टू बी कवर, सरफेस एरिया जो टैंक का कवर करना है वो हो जाएगा 5a स्क्वायर, बिकॉज 5 साइड है जो 5 और a स्क्वायर यानी 150। तो उसको अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। एरिया ऑफ टाइल्स जो स्क्वायर शेप की है तो साइड इंटू साइड तो 25 इंटू 25। अब नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक टू बी कवर्ड विद द टाइल्स, यानी टैंक का जितना पोर्शन हमें टाइल्स के थ्रू कवर करना है उसका एरिया, और नीचे एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल्स का एरिया। तो ऊपर अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, एज इट इज़ छोड़ दिया था। अब हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के बाद आंसर आ रहा है 180। सो total tiles required is 180. Now the cost of 1 dozen, it means the cost of 12 tiles is 360. Therefore the cost of 1 tile is equal to 360 upon 12 is equal to 30. तो अब एक टाइल्स की प्राइस 30 है, टोटल उसे 180 टाइल्स लगानी है, तो उसे टोटल खर्चा होगा 5400 रुपीज़ का। तो ओनली आपको
फार्मूला जो हम सीख गए उसमें से यही याद रखना है कि कौन से सम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम सम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।